Class 9, Chapter 4, Exploring Algebraic Identities. It is very much similar to the Class 8 chapter of Algebraic Identities. But this chapter is mostly in the video format. You have to watch my videos for this chapter. Now, example 1. Consider, take 3 consecutive squares. 1, 4, 9. Add 1 and first and third square, 10 and twice, और मिडल स्क्वायर को मैंने ट्वाइस किया 8 और दोनों को माइनस किया, देन आई गेट द आंसर 2. अगेन वन मोर लिया 4, 9, 16. इन दोनों को प्लस किया 4 प्लस 16 20. मिडल स्क्वायर को ट्वाइस किया 18 minus किया, again I get 2. So similarly, if we take any 3 consecutive squares and then we will add first and the third square, then subtract करेंगे middle square के twice से, तो I will always get the 2 answer. We can take now think and reflect of think and reflect. Page 69. In this we have try and find other patterns like this one. For example, you can consider 4 consecutive squares and see if you can find a pattern. 4 consecutive squares लेते हैं, 4 consecutive squares. Squares क्या हो जाएगा? 1, 4, 9, 16. फर्स्ट एंड फोर्थ को मैंने प्लस किया 17. सेकेंड एंड थर्ड को प्लस किया 13. दोनों को माइनस किया, आई विल गेट द 4 आंसर. अगेन और लेते हैं 4, 9, 16, 25. 4 प्लस 25 प्लस 29, 9 plus 16 plus 25. Again minus किया, again my answer is 4. So if we are taking 4 consecutive squares and adding first and fourth, second and third, then subtracting them, then I will always get the number 4. Now next one is visualizing identities. Suppose this is my A unit and this is by B unit. Both will become A plus B. Both will become A plus B. Let's draw A plus B square. First, let's draw A square. A unit, A unit, A unit, A unit. A, 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 A. अब इसके आगे B unit, B unit, B unit. Now, this is A plus B, this is A plus B, this is A plus B, and this is also A plus B. Now, I got one bigger square, this square, and this square. The area of this square is A square. Area, this is rectangle, is area is AB. This is again square, this is B square, and this is rectangle, is area is AB. Now observe the area of A plus B square. A plus B square. इस पूरे एरिया में क्या क्या ऐड हो रहा है? A square, AB, A square, AB, B square and AB. ठीक है, अब इसको अरेंज करेंगे. A square plus 2AB plus B square. This is how we visualize the identity A plus B square. Now example 2. Now let A is equal to -2, B is equal to -3.
then a plus b is minus 2 minus 3, that is minus 5. Then a plus b square is minus 5 square, that is 25. Now let's take a square. A square is minus 2 into minus 2, that is 4. B square is minus 3 into minus 3, that is 9. Now AB is minus 2 into minus 3, that is 6. Now add this a square plus b square plus 2ab. A square is 4 plus 9 plus 2 into 6. 4 plus 9, 13 plus 12, 25. So a square plus b square plus 2ab is 25. So a plus b whole square is 25. Now let's take the rational number, that is let a be minus 2 by 3 and b is minus 3 by 4. इसको भी सेम हम करेंगे ऐसा, या सीधा ये आइडेंटिटी लगा देते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2 बाई 3 स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 3 बाई 4 स्क्वायर प्लस 2 into minus 2 by 3 into minus 3 by 4. 4 by 9, 9 by 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 से कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हो जाएगा, पर एलसीएम लिया. Here I want to take a direction. This is plus 3 by 4, not minus. So यहाँ से minus हटा देंगे तो यहाँ minus आए. This is plus 3 by 4. In your book it is plus 3 by 4. आप minus 3 by 4 से भी निकाल सकते हैं. In book it is plus 3 by 4. Now LCM 9 and 16, 144. 16 4s are 64 plus 16 9s are 9 9s are 81 minus 144. This is 145 minus 144 upon 144. This is 1 upon 44. अब a plus b होल स्क्वायर अगर सीधा लें हम इसको, a plus b होल स्क्वायर minus 2 by 3 plus 3 by 4 whole square, 12 minus 8. This is 1 upon 12 whole square, that is 1 upon 44. It is the same here, 1 upon 44. So it seems that a plus b whole square is equal to a square plus 2ab square plus 2ab is true for all the rational numbers. Now but some equations are not true for the all rational numbers, such that difference between equation and identity. अब मैंने कहा some equations are not true for the all the rational numbers. Suppose we have this equation x square minus 1 is equal to 24. It is true only when x is 5 or x is minus 5, तभी ये true है. अगर इसकी जगह s की जगह मैं 4 लगा दूँ, 4 square minus 1 is equal to 24, 16 square minus 1 24, that is 15 is not equal to 24. So it is not true for any other value of x except these two values 5 and minus 5. But the identity a square plus b square plus 2ab is true for all the rational number. True for all
rational numbers. So this is called algebraic identity, and this is called equation. Equation cannot be true for any वैल्यू x और y. एक्स वाई भी आ सकता है इसमें, कोई एक्स वाई या किसी भी वेरिएबल के वैल्यू, किसी भी वेरिएबल की कोई भी वैल्यू के लिए इक्वेशन ट्रू नहीं होती है. उनके लिए फिक्स वेरिएबल्स ही होते हैं, जैसे 5 एंड -5 के लिए ये ट्रू है. लेकिन अलजेब्रिक आइडेंटिटी एनी रेशनल नंबर्स के लिए ट्रू होती है. थैंक यू बेटा. काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल्स फॉर मोर वीडियोज़ एंड शॉर्ट्स नोटिफिकेशन.